13 और 23 ये हमें डिस्कस करने हैं. Now before I go to them, I promised you I'll be giving you some general tips for proving trigonometric identities. Let's start with that first, and then we'll move on to some of those questions involving trigonometric identities. Okay, so the first thing that you always have to think about, so when you're starting to prove a trigonometric identity, the first thing that you look at is that you start from the more complex side. Start from the more complex side. So you've got two sides, right? You've got left hand side and right hand side. जो भी side दोनों में से ज़्यादा complex लगती है आपको, उससे आपको start करना है और दूसरी side के equal prove करना है. And prove it equal to or identical to the other side. Now the problem is, how do you figure out which side is more complex, right? So there are some thumb rules for this, and I'm going to list them down here. So high complexity and low complexity. The first thing that you look at is whether whether one of the two sides has compound angles or double angles. तो जिस साइड के ऊपर कंपाउंड या फिर डबल एंगल्स होंगे, that's going to be considered more complex. और जिस साइड के ऊपर सिंगल एंगल्स होंगे, that is considered relatively less complex. All right, so that's the first thing that you look at. और इसकी सबसे ज्यादा वेटेज होगी इस साइड पे जो है आपके पास डबल या कंपाउंड एंगल आता है, उस पे उसको आप पहले कंसिडर करो, और जिस साइड के ऊपर आपके पास सिंगल एंगल आता है वो आप सिंपल फॉर्म में कंसिडर करो. तो दूसरी जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइड है उससे स्टार्ट करोगे, और सिंगल एंगल्स वाली जो कम कॉम्प्लेक्स साइड है उसकी तरफ आप जाओगे. ओके, सो that's the very first thing that you always look at. अच्छा, उसके अलावा फिर क्या हो सकता है? One of the sides may have a fraction. दूसरी साइड पे हो सकता है there is no fraction. तो जिस साइड पे फ्रैक्शन हो आप उससे स्टार्ट करोगे. जो नो फ्रैक्शन वाली साइड होगी, that's going to be considered less complex, right? So if we had to prove an identity जिसके ऊपर एक साइड के ऊपर आपके पास एक फ्रैक्शन है, something like this, and that's identical to something like this. अगर आप राइट से लेफ्ट पे जाओगे, that's going to become fairly more complex as compared to going from left to right in this case, because fraction से इस form में simplify करना is going to be easier. इस form से एक fraction में जाना, that's generally going to be harder. Okay, so एक आपके पास ये चीज आ गई कि fraction जो है उस वाली साइड जिस साइड आ रही होगी, that's generally considered more tedious. It's considered more complex. Okay, अच्छा, उसके बाद फिर you have a higher number of terms. जिस साइड के ऊपर आपके पास ज्यादा terms आ रही हो, right? So you've got, let's say, something plus something else plus something else. If you got something like this, right? Plus minus something else plus minus something else. On the other side, you may have only one single fraction, one single term. तो जिस साइड पे single term होगी, that is considered relatively less complex. लेकिन remember, हमेशा आपने order में चलना है. So ये first वाला जो step है ना, this is the most important. अब कभी हो सकता है कि किस एक साइड के ऊपर कंपाउंड एंगल्स आ रहे हो, एक साइड के ऊपर दूसरी साइड के ऊपर सिंगल टर्म भी हो. How do you choose between them? कंपाउंड एंगल आपको कह रहा है कि हाई कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन उस साइड पे सिंगल टर्म है, उसका मतलब है कि लो कॉम्प्लेक्सिटी है. So what would you decide based on that? कि आप इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंसीडर करोगे based on compound angle, या उसको less complex consider करोगे based on single term. आपने इस तरह जाना है. The first thing that you look at is
compound angles or double angles, then you look at fractions or the number of terms that you have. Okay, so this is one way to look at complexity of the two sides that you have, right? So जिस side के ऊपर ये चीजें आ रही होंगी, आपने उनसे जिस side के ऊपर high complexity वाली चीजें आ रही होंगी, उस side से आप start करोगे, और जिस side पे low complexity वाली चीजें आ रही होंगी, उस side पे आप move करोगे. Alright, so that's an important point. अच्छा, अब इसके बाद some other things that you should try to do. Now these are all thumb rules. It's not like you're always going to do this. It's going to be the case in majority of the cases, right? कभी-कभी आपको इसके against भी जाना पड़ सकता है इन चीजों के, तो जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ. But majority of the cases के अंदर, this is how you would be dealing with the identities. Okay, if there are reciprocal correct functions, you should convert them to their base functions, right? For example, अगर आपके पास cosecant आ रहा है और दूसरी साइड के ऊपर आपके पास cosecant नहीं आ रहा, तो मतलब साइन या कॉस की टर्म्स में, तो आपने जो भी रेसिप्रोकल फंक्शंस आ रहे होंगे उनको आपने कन्वर्ट कर लेना है टू देयर बेस फंक्शन. फॉर एग्जांपल cosecant x है, you can write that as 1 over sin x. अगर आपके पास secant x आ रहा है, you can write that as 1 over cos x. In most scenarios, of course it will depend on the context, आपके पास राइट साइड दूसरी साइड के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, लेकिन most scenarios के अंदर आप reciprocal functions को इनमें convert कर लेते हो, because most of the identities that you have, they deal with sine and cos or tan. Reciprocal functions के हमारे पास सिर्फ दो identities, right? तो हम उस पे बहुत ज़्यादा manipulation नहीं कर सकते. So if you can apply, if there are squares of these, cosecant square है, secant square है, then you can think about applying one of those identities. यानी कि 1 plus tan square equals secant square, वो use कर सकते हो. 1 plus cot square equals cosecant square, वो use कर सकते हो. लेकिन अगर powers नहीं है, if these are single powers, cosecant x, secant x like this, then it's better to convert them to their base functions. Okay, then it's better to convert them to their base functions. अच्छा, ये हो गया. अब इसके अलावा what else should you think about? So the algebraic identities, ये आपको बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेंगी, बहुत कॉमनली यूज करनी पड़ेगी. जो सबसे ज्यादा यूज होगी ना, that's going to be this identity, a square minus b square identical to a plus b into a minus b. बाकी दोनों identities भी you may have to use some of them as well. Keeping in mind, you may need to go from one side to the other. आप left से right भी आपको जाना पड़ सकता है, और right से left भी आपको आना पड़ सकता है. और दूसरी identities के केस के अंदर a plus b whole square, a minus b whole square होती हैं, उनके अंदर mostly you would have something like this given, and you may need to go and make them something like this. तो ये recognize करना कि something is of this form and it can be written like this, this is also important. Similarly, 2ab plus b square वाली ये वाली identity, mostly आप इस direction के अंदर जा रहे होगे. उल्टी डायरेक्शन के अंदर जाना तो वो तो काफी सिंपल है ना, तो वो तो you can easily see कि अच्छा इसको expand करना है, तो you can just use this thing. So that's fairly straightforward. But a lot of times you have to go the other way around. You have got something like this, you get something like this, और आपको इस form के अंदर जाना होगा, a plus b whole square, a minus b whole square. उसके लिए recognize करना कि the form is like this, that you can convert it to either a plus b whole square or a minus b whole square. So that is going to be important there. ठीक है? And then इसके बाद a lot of times what you have to
So this is a very important identity, going from sine square to cos square and cos square to sine square. This will be used a lot. Sine square x plus cos square x equals 1, और इसकी बाकी दोनों फॉर्म्स है. आपने फॉर एग्जांपल cos square से sin square में जाना है, sin square से cos square में जाना है. It's going to be used a lot to go from sin square x to cos square x or the other way around. This is going to be used very frequently, right? So you should always have this in your mind. अगर आपको बाकी बहुत ज़्यादा identities अभी start के अंदर, even if you don't remember a lot of them for now, ये तो आपको बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए कि आप cos square से sin square में किस तरह से जा सकते हो, foreign sin square से cos square में किस तरह से जा सकते हो. Okay, so that's also going to be important. ठीक है. अब इसके बाद फिर we'll keep adding, so maybe I'm forgetting one or two things here. We'll just keep adding, a couple of more things that are important here while we're working with those identities. अभी के लिए, these are some things that you should keep in mind. Okay, अभी के लिए these are some things that you should keep in mind, and I'll add more to this list as we do some more identities. ठीक है. सबसे पहले तो high complexity, low complexity ये किस तरह से decide करना है, and then there are some general things that you should keep in mind while you're working with those identities. Reciprocal functions हो तो उसको base में convert कर लें. ये आपके पास जो algebraic identities थी ये बहुत ज़्यादा use होंगी. आपको अक्सर factorize करना पड़ेगा. Factorize करके you may need to cancel some things in the numerator and the denominator. So उसमें ये बहुत ज़्यादा use हुआ करेगा. So you should have this in your mind. There are a couple of more as well that I was thinking about, but I'm not remembering them right now. We'll come back to. I'll just add to this list when we have when we're working with some questions उसके साथ साथ हम देखेंगे अगर यहाँ पे कुछ हमें add करना पड़े. अच्छा, एक चीज यहाँ पे भी ये भी add कर लेते हैं. If you have to do this sin 4 theta आपके पास, so इसके लिए आप क्या कर सकते हो, sin 4 theta हो या cos 4 theta हो, you use the double angle identity for this. So that's sin, हमारे पास double angle identity वैसे क्या होती थी, it was sin 2a equals 2 sin a cos of a, right? This was the double angle identity that we had. तो जो भी एंगल यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है उसको उन्होंने सिंगल एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया राइट पे. So if it was 4 theta on the left, आपके पास राइट साइड पे क्या हो जाएगा, उसका हाफ एंगल, राइट? सो 2 into sin, यहाँ पे 2a था तो ये a हो गया था. Now it's 4 theta, so इसका हाफ हो जाएगा, that's sin 2 theta. And similarly cos 2 theta. And for cos 4 theta as well, जनरल जो आपके पास आइडेंटिटी होती है, the standard double angle identity होती है, that is cos 2a equals cos square a minus sin square a, right? और इसकी बाकी forms भी, of course, you can see them. 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x, बाकी दोनों forms भी. उसमें भी क्या होगा, whatever is the angle on the left side, उसको half कर देंगे right side के ऊपर. So ये 4 theta आ जाए यहाँ पे, you're going to have cos square 2 theta minus sin square 2 theta. इसकी बाकी forms क्या होती हैं, 2 cos square a minus 1 or 1 minus 2 sin square a. So similarly, that's going to be the same here as well. You get 2 cos square 2 theta minus 1 or 1 minus 2 sin square 2 theta. So जब left पे cos 4 theta है, sin 4 theta आ रहा हो, you can write it like this. अगर left side पे आपके पास sin 3 theta या cos 3 theta आ रहा है, you break it down into two parts. अगर ये odd number आ रहा हो यहाँ पे, what do you do for that? You say it's 2 theta plus theta, or similarly here cos of 2 theta plus theta, and then you apply the compound angle identity to this.
it becomes sine 2 theta into cos theta plus cos 2 theta into sine theta. Similarly here it becomes cos of 2 theta into cos of theta minus sine of 2 theta into sine of theta. So it's cos और sine की जो compound angle identities हैं वो हम यहाँ पे लगा देंगे. So this is also something that you may have to deal with in a number of situations. 4 theta वाली identity को prove करना हो तो आप उसको double angle से करते हो. अगर आपको 3 theta आ जाए कहीं पे, you break it down into two angles like this, 2 theta plus theta. All right. So these are some cases that you will sort of need to remember. Okay. अच्छा, अब इसके साथ ना कुछ जनरल चीजें हैं जो आपको उसका ध्यान रखना होता है. When you are solving a trigonometric identity, you know, you treat it like a puzzle. So you need to have the direction in your mind. So आपके पास अगर एक ये है left hand side, right, and it's equal to the right hand side. So जो भी identity यहाँ पर है, तो अगर आपको लगता है लेफ्ट साइड फॉर एग्जांपल लेस कॉम्प्लेक्स है, if this is, you know, the less complex side is the left hand side, तो आप क्या करना चाहोगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे और राइट साइड पे आप जाओगे. तो इट्स लाइक यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यू एंड एट दिस पॉइंट, राइट. सो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और आपने इस पॉइंट पे एंड करना है. And how do you go from the starting point to this end point? You basically have these identities as the paths that you can follow. आपने इस starting point से इस end point पे जाना है, right? Left hand side and right hand side पे जाना है, and these are all the paths that you can follow. Right? अब बस ये सारे paths हैं. अब हर step पे आपने देखना है कि अच्छा what is going to get you closer to your final destination. आप right hand side, आप left hand side से start कर रहे हो, लेकिन आपने right hand side पे नजर रखनी है कि अच्छा are you getting closer to that or are you getting further away from that. हर step पे आप देखो कि अच्छा are you getting closer to what you require at the end. If not, maybe you know you need to change your direction, you need to come back and reassess कि अच्छा कोई शायद मैं गलत डायरेक्शन ले लिए, तो उस तब दोबारा रीअसेस करो कि अच्छा कहीं और जा सकते थे, राइट. सो यू हैव टू थिंक एट एवरी सिंगल स्टेप. आपने माइंड में उसको पहले से सॉल्व करना है नेक्स्ट 2-3 स्टेप्स को कि अच्छा नेक्स्ट अब मैंने ये करना है और वो किस तरह से मुझे अपने फाइनल जो है वो एंड गोल मुझे चाहिए यहाँ पे उसके पास लेके जाएगा. सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू नो, मेंटली बिफोर यू राइट इट डाउन. ठीक है, तो आपने दिमाग में उसके साथ साथ जो है वो करते जाना. अच्छा, इसी के साथ एक और चीज तो मुझे भी याद आई. Sometimes what you can do is you can go from the left hand side to the right hand side. Right, left hand side अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और right hand side less कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड से क्या जाओगे, राइट हैंड साइड पे जाओगे. Sometimes if the right hand side is more complex, you go from the right hand side to the left hand side. Of right hand side से start करते हो and you go to the left hand side. Okay, so in this case, for instance, we say the right hand side was more complex and the left hand side was simpler. But there's also another possibility. कभी-कभी होता है you have this identity like this. You've got some, you know, thing on the left side, you've got something on the right side, and they're both relatively complex. They are both relatively complex, right? So for instance, हमने कहा कि अच्छा एक साइड पे जिस साइड पे कंपाउंड एंगल आए या जिस साइड पे डबल एंगल आए, that's more complex. So let's say you have the scenario कि एक साइड पे कंपाउंड एंगल आ रहा है और एक साइड पे डबल एंगल आ रहा है. Now both of them are relatively complex, you know, expressions. तो आप उसमें क्या कर सकते हो, you simplify both of them. अब दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो.
You simplify this side, you simplify this side, right? And you meet somewhere in the middle. Meet somewhere in the middle. यानी दोनों को सिंप्लीफाई कर दो और दरमियान में जाके किसी पॉइंट के ऊपर वो दोनों एक्सप्रेशंस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी. And that's another way to prove something. You don't necessarily have to go from one side and make it exactly as the other side. आप ये भी कर सकते हो, आप दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई कर लो और दरमियान में कहीं जाके किसी पॉइंट के ऊपर जो आपने दोनों साइड्स को जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे हो गया, दरमियान में आप जाके प्रूव कर दो कि अच्छा both sides are now equal. But keep in mind you cannot go from one side to the other. एक साइड से कोई टर्म लेफ्ट साइड से कोई टर्म राइट पे नहीं लेके जा सकते, राइट साइड से कोई टर्म लेफ्ट पे नहीं लेके जा सकते. कीप दैट इन माइंड. आइडेंटिटीज के अंदर यू कैन डू नॉट ट्रीट इट लाइक एन इक्वेशन कि आप जो है अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह लिखा होता है 2x आइडेंटिकल टू 3x minus x, you don't take these things to the left side. आपने कोई टर्म उठा के यहाँ से इसको इस तरह ही कर देना 2x plus x identical to 3x. Even though it still holds, लेकिन उसने प्रूव करने के लिए आपको क्या कहा था? उसने आपको ये प्रूव करने के लिए कहा था. अगर आप इसको दूसरी साइड पे ले जाओगे, you've already assumed ये आइडेंटिटी ट्रू है, इसलिए आप x minus x को दूसरी साइड पे ले जा रहे हो. So that's not something that you can do because अगर आप इस तरह से कर दो कि एक साइड से कोई टर्म उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, you are intuitively assuming कि ये जो आइडेंटिटी है दैट इज ट्रू. और क्योंकि ये ट्रू है आप ये कह रहे हो कि अच्छा आप इस साइड से ये एक टर्म उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाओ, लेकिन ये आप अज्यूम नहीं कर सकते कि ये ट्रू है ऑलरेडी बिकॉज वही तो आपको प्रूव करना है. तो यू डू नॉट टेक अ टर्म फ्रॉम वन साइड टू द अदर. यू डू नॉट do that while you're proving identities. So that's another thing that you should keep in mind. Do not take terms from one side of the identity to another. You do not do that. If you do that, even though you may end up proving it correctly in your mind at the end, आपके पास end पे दोनों sides equal आ जाएं, but you will get some deduction for that because you will have assumed in that case कि वो identity true है, जो आपको असल में तो वो प्रूव करना था कि आइडेंटिटी ट्रू है. अगर आप टर्म्स को मैनिपुलेट करोगे, एक साइड को दूसरी साइड पे ले जाओगे, तो आप एक assumption ले रहे हो कि वो ऑलरेडी ट्रू है, राइट? सो एग्जामिनर वुड नॉट लाइक दैट कि आपने वो ऑलरेडी assume कर लिया because that's what you were asked to prove. So you cannot do that. You cannot take one term from you cannot take terms from one side to the other. So keep that in mind as well.